Good morning everyone. Today we have to start here question number 4, page number 57 from the following trial balance of Mrs. Meera and Madhav prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on date. First what we have to mark the adjustment. This is T form trial balance. First adjustment is closing stock, then come to the second adjustment, provide provision for doubtful debts rupees 2000. So doubtful debt, this is effect on the debtors. So here we have to mark adjustment number 2 and see here bad debts is given or not. No bad debts is given. So then mark here adjustment number 2 for debtors. Then third adjustment, create reserve for discount on debtors 3%. So again effect on debtors. So adjustment number 3 for debtors. Then fourth adjustment, valued of leasehold premises on 31st March 2019 rupees 1 lakh. Now leasehold premises, this is also asset. So here in trial balance we have to mark here adjustment number 4. Then adjustment number 5, outstanding expenses printing and stationery rupees 500. So here printing and stationery adjustment number 5. Then our next step is what? Here we have to see the debit side and after that we have to see the credit side. Now here we are opening in the books of Meera and Madhav. We are preparing trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019. Everything we have to write here. Left hand side is debit side, right hand side is credit side. So in the starting, first we have to write to opening stock, then to purchases and credit side by sales. Okay. Now we have to start here. See, first debit side we have to start. First is what given? Stock on 1st April 2018, 25,000. So it is recorded trading account debit side here to opening stock 25,000. One by one we have to make the tick. Then second one, debtors is given. Debtors, this is what? Asset. So asset we have to record balance sheet asset side here, debtors 80,500. See, here we are writing adjustment number 2 and 3. Now see the adjustment number 2, provide provision for doubtful debts rupees 2000. So एडजस्टमेंट का डाउटफुल डेब्ट्स ये क्या होता है? न्यू आरडीडी, उसको न्यू आरडीडी बोलेंगे. सो लेस फ्रॉम डेटर्स, बिकॉज ये 2000 मिलने वाले नहीं है तो डेटर्स से क्या होगा? लेस होगा. लेस, सो हियर इफेक्ट, फर्स्ट इफेक्ट लेस न्यू आरडीडी minus 2000. So inner column we have to write 78,500 because second adjustment is there. Okay. After that immediately we have to write here second effect. Profit and loss debit side to RDD, to new RDD 2000. We have to write outer column because no any old RDD is given. Then see the second adjustment is over. Then see the third adjustment. Create reserve for discount on debtors at the rate 3%. So here what reserve is created for what? Getting the amount. So create reserve for discount on debtors. So we have to calculate discount on debtors 78,500. Remaining amount के ऊपर हम लोग calculate करेंगे. So 3% on 78,500. This is again less because what? Provision is made for what? Getting the amount. So less provision for discount on debtors 2,355. माइनस करके अमाउंट आउटर कॉलम में लिखेंगे 76,145. तो इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड. सो हियर वी आर राइटिंग सेपरेटली टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 2,355. So two effects are over. So adjustment number 3 is also completed. Then next is what? Bills receivable. Bills receivable, this is asset. So recorded balance sheet asset side. Here bills receivable 10,000. So one by one completed. We have to make the tick, stock over debtors or bills receivable. Then purchases.
Purchases trading account debit side to purchases. Inner column because what returns are given. 2,08,500. Next, returns is given. Returns debit returns means sales return. So trading account credit side here less from sales less returns रुपीज़ 1000 ब्रैकेट में लिखा है सेल्स रिटर्न क्योंकि डेबिट का रिटर्न से. देन कैरेज इनवर्ड. See here two carriages are there. One carriage inward and one is carriage outward. Carriage inward, this is recorded trading account debit side. Here two carriage inward 3000. Here what? That carriage inward, that is what before production. So this is direct expenses. That's why it is recorded trading account debit side. And carriage outward, that is what after productions we are supplying goods to the market. So इसको क्या बोलेंगे? Carriage outward. So this is indirect expenses. So recorded profit and loss account, that is to carriage outward 4,500. Then next is motor vehicle. Motor vehicle, this is what? Asset. So recorded balance sheet asset side 55,000. After that general expenses. General expenses, this is recorded profit and loss account. So to general expenses 1,800. After that export duty. Export duty, this is indirect expenses because what? After production. So recorded to profit and loss account 900 to export duty. After that advertisement is given. Advertisement, and here in bracket written for 3 years from 1st October 2018. Means this is hidden adjustment. So advertisement recorded here profit and loss account to advertisement 4,800. Now we have to solve the adjustment. That adjustment is here 3 years का पहले से भरा हुआ है from 1st October 2019. So 3 years का भरा है मतलब हमें क्या करना है? Only 1 year का निकालना है because this balance sheet is for 1 year, that is from 1st April 2018 to 31st March 2019. तो यहाँ पे पहले 3 years का भरा है तो हमें पहले 3 years का 1 year का निकालना है. So here we are writing advertisement. Amount है advertisement का 4,800. This is for 3 years 4,800. Okay. So for 3 years with the effect from 1st October 2018. तो 1 year का पहले कितना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. So 4,800 into 1/3. तो कितना आएगा हियर? 1,600. 4 1 जा 1, 4 6 जा 18, 1,600. लेकिन इसका इफेक्ट कब से दिया है? फ्रॉम 1st October 2018. सो 1st October में ये एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंसेस हुआ है. सो अप टू कब तक हमें निकालना है? 31st March 2019. तो कितने महीने होते हैं? 6 months. सो हमें खाली 6 months का ही निकालना है. सो 1,600 इंटू 3/6/12. ओके. सो 6/12 कितना आएगा? 800. सो 800 ये साल का एक्सपेंसेस है. एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस फॉर एडवर्टाइजमेंट. सो हमें क्या करना पड़ेगा? फुल ईयर का कितना है? 3 years का 4,800 minus 800. सो 4,000 इज कॉल्ड एज अ प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट. ओके. सो हियर एडवर्टाइजमेंट का देखो प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट कितना आया है? माइनस करेंगे 4,000, आउटर कॉलम 800 और ये 4,000 का सेकेंड इफेक्ट आएगा एसेट साइड प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट 4,000. ओके. सो दिस इज ऑल्सो completed. Then printing and stationery. Next, printing and stationery, this is also recorded profit and loss account. Adjustment is there to printing and stationery 1,000.
एडजस्टमेंट है इसलिए इनर कॉलम में पहले लिखेंगे. सी हियर एडजस्टमेंट नंबर 5. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ₹500. आउटस्टैंडिंग दैट इज व्हाट, अनपेड नॉट पेड, तो हमें पेड करना पड़ेगा. सो एक्सपेंसेस बढ़ गया. एड आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 500, आउटर कॉलम 1700. देन सेकेंड इफेक्ट हियर liability side, outstanding printing and stationery 500. Then drawing is given. So drawing what, less from capitals. So here बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में कैपिटल लिखे हैं, फिर उसके बाद लाइन छोड़ देंगे क्योंकि मीरा का कैपिटल आएगा. आफ्टर दैट लेस ड्राइंग, मीरा 3500. देन माधव ड्राइंग लेस 2000. Okay, then next leasehold premises. Leasehold premises that is what, asset. Leasehold premises मतलब premises भाड़े पे लिया है for 10 years 15 years for long period. Okay, so leasehold premises, this is what, property. So recorded balance sheet asset side, here leasehold premises 1,10,000. What is the value given here? Valued, see that adjustment, valued of leasehold premises on 31st March 2019 ₹1 lakh. मतलब 31st March 2019 में उसका वैल्यू कितना हो गया, 1 लाख. मतलब लेस हो करने का है. 1,10,000 माइनस 1 लाख, देन 10,000 दिस इज कॉल्ड एज अ डेप्रिसिएशन. मतलब 10,000 से वैल्यू कम हो गया. सो लेस फ्रॉम लीजहोल्ड प्रीमाइसेस हियर, आउटर कॉलम 1 lakh. Second effect, profit and loss debit side to depreciation on leasehold premises 10,000. So here adjustment number 5 is also completed. Then cash at bank. Cash at bank, this is asset, cash balance. This is property, asset. So recorded balance sheet asset side, cash at bank 45,000. After that furniture. Furniture, this is asset. Recorded balance sheet asset side, furniture 8,300. सो जैसे होता है वैसे हम लोग ने सब टिक किया है. चेक इट दैट ऑल टिक मार्क इज देयर और नॉट. ओके, देन कम टू द क्रेडिट साइड. डेबिट साइड इज कंप्लीटेड. क्रेडिट का क्रेडिट में ही रिकॉर्ड होता है, डेबिट का डेबिट में. सी हियर व्हाट गिवन, क्रेडिट साइड बैंक ओवरड्राफ्ट. बैंक ओवरड्राफ्ट, दिस इज व्हाट, क्रेडिट बैलेंस. सो रिकॉर्डेड बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, बैंक ओवरड्राफ्ट 5,000. So this is what, extra amount is withdrawn from the bank. So this is our responsibility to pay that amount. So it is recorded liability side, bank overdraft 5,000, outer column. Then bills payable. This is also liability, bills paid करना पड़ेगा. Responsibility. So recorded balance sheet liability side, bills payable 12,500. After that creditors. Creditors is also liability. Suppliers को पैसा देना पड़ेगा. So this is also liability. Recorded liability side balance sheet, creditors 68,000. After that sales. Sales recorded trading account, credit side buy sales 3,25,000. लेस पहले से हम लोग ने लिखा था 1,000. So outer column 3,24,000. After that outstanding rent. So this is liability. Okay. ये ट्रायल बैलेंस में आउटस्टैंडिंग रेंट दिया है, इसका एक ही इफेक्ट होगा क्योंकि एडजस्टमेंट में नहीं दिया है. सो आउटस्टैंडिंग रेंट लाइबिलिटी रिकॉर्डेड हियर, लाइबिलिटी साइड बैलेंस शीट, आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000. सेम वे अनपेड वेजेस, अनपेड दैट इज ऑल्सो आउटस्टैंडिंग. सो अनपेड वेजेस बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड 1,500. देन कैपिटल्स आर गिवन हियर. कैपिटल बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, मीरा 75,000, Madhav 75,000. And after that purchase return. This is credit balance. So less from purchases, trading account debit side, less from purchases 1,000, outer column 2,07,500. See here all tick mark is over. All here we are completed. Then see the which adjustment remains. 4 also completed, 5 also completed. Then first adjustment, closing stock is valued at ₹32,000. So closing stock का इफेक्ट कहाँ कहाँ पे आता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक 32,000 एंड बैलेंस शीट एसेट साइड क्लोजिंग स्टॉक 32,000. Now our next step is what,
we have to do the total. Here we have to do the total. Now see here, everything is completed. नेक्स्ट स्टेप होता है हमें ट्रेडिंग का देखना है कौन सा साइड ज़्यादा है, तो दोनों साइड का टोटल करेंगे. नेचुरली हियर 3,24,000, हियर 32,000, मीन्स क्रेडिट साइड इज मोर, सो क्रेडिट साइड इज 3,56,000. सो ट्रेडिंग क्रेडिट साइड 3,56,000. उसके बाद डेबिट का टोटल करेंगे. ट्रेडिंग डेबिट का टोटल यहाँ तक आता है 2,35,500. So credit total minus debit total, this is called as a gross profit. That trading account credit balances is known as gross profit. That gross profit कितना आ रहा है 1,20,500. ओके, मीन्स क्रेडिट बैलेंस. ये क्रेडिट बैलेंस कहाँ पे ट्रांसफर होगा? प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड. हियर बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 1,20,500. आफ्टर 2 लाइन यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट होता है. ओके, नाउ वी हैव टू डू द टोटल ऑफ व्हाट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. दिस नेचुरली क्रेडिट साइड इज मोर 1,20,500. ओके, सो प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट टोटल 1,20,500 माइनस हियर डेबिट टोटल यहाँ तक कितना आता है 24,055. वो क्रेडिट टोटल माइनस डेबिट टोटल बैलेंस आएगा, उसको क्या बोलेंगे? नेट प्रॉफिट. अभी नेट प्रॉफिट कितना आ गया 96,445. दैट 96,000 वी हैव टू राइट हियर टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट 96,445. अभी देखो क्वेश्चन में दिया नहीं है कि रेशो क्या है. देन व्हाट वी हैव टू assume that this is a equal ratio. Here also Mira's capital is 75,000, Madhav capital is 75,000, means equal ratio. So equal ratio is 1:1. So ये net profit 96,445 divided into 1/2. Why 1/2? 1 plus 1 2. So 1/2. So Mira's balance is here 96,445. We have to divide. Then balance is what? 48,000. Here 96,445 into 1/2. 48,223. Same way here Meera and Mohan also same, because equal ratio 96,445 into 1/2. So 48,223. So we have to write here Mira's share ratio, profit sharing ratio, and Madhav profit sharing ratio. So both the side total 1,20,500. Then this net profit we have to transfer to balance sheet. Liability side here add net profit. कितना net profit add हो गया 48,223. So outer column amount is here, then here total 1 lakh. इनर कॉलम में ही टोटल लिखेंगे 1,23,233. ऐड हो गया ये. ओके, देन लेस ड्राइंग. देन रिमेनिंग अमाउंट इज दैट 1,23,223 माइनस 3,500. सो बैलेंस आता है 1,19,723. ओके, then Madhav add net profit, same net profit 48,222. Okay, 222 add करेंगे. So outer column amount, inner column amount 1,23,222. लेस ड्राइंग करेंगे. So बैलेंस आएगा 1,21,222. See that here 0.5 आता है, तो इसीलिए 0.5 आता है, तो इसलिए क्या लिया है 3 लिया है. जैसे बैलेंस आता है 48,223.5. सो अमाउंट हो गई 48,223.5 आता है, मतलब 1 ऐड करते हैं तो 48,223 मीरा का आएगा नेट प्रॉफिट. देन वी हैव टू डू द टोटल ऑफ बैलेंस शीट
liability side, here we have to do the total. So total आता है 3,30,445. 3,30,445. Then asset side total is also 3,30,445. So here what balance sheet is tallied here. See new adjustment in this question, that is what valued of leasehold premises 31st March 2019 rupees 1 lakh. So here this question is completed.